I last video what is ideal voltage source and what is practical voltage source and ता भितर difference कौन आम देखी ideal voltage source रे internal resistance 0 थिले and practical voltage source रे आम गोटे finite internal resistance लगे. Now we will discuss on the ideal current source and the practical current source. So in this case ideal current source रे आम कौन करिए infinite internal resistance लगे. And in case of the practical current source आमे गोटे finite internal resistance थिबो. देखो सब बेले कोन whether practical voltage source हो किंबा practical current source हो तो सही जगह रे आमे कोन करी ना गोटे finite internal resistance थिबो. देखो एठी also practical voltage source रे आमे गोटे finite internal resistance थिला. But in case of the ideal voltage source रे आमरो zero resistance थिला. But ideal current source रे आमरो इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस कथा हम डिस्कशन करिया. सो ये सर्किट डायग्राम रे हमें एठी कोन करबा ना गोटे करंट सोर्स लगे जनी दैट इज योर आईएस एंड हमर जो इंटरनल रेजिस्टेंस एठी अछि हमें आरएस कहबा. तो एठी रेजिस्टेंस रे वैल्यू केते अछि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हमर एठी लागि. ओके एंड हियर द पोटेंशियल ड्रॉप और द करंट अक्रॉस दिस टर्मिनल इज सपोज एठी हमर करंट फ्लो करछि सपोज हमर आई एंड हियर द करंट इज सपोज I1. So from the Ohm's law we know first V equal to IR, or we can write I will be equal to V by R. आम एमती लिख पारे. तो मत सपोज ये कैलकुलेट करार अच्छी दिस I1 रो वैल्यू मत कैलकुलेट करार अच्छी माने अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस RS केते अमाउंट रो करंट टा फ्लो कर ना. इफ आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 आई कैन सिंपली राइट दिस इज योर I1 इक्वल टू V by RS. So it is RS रो वैल्यू इनफाइनाइट तो समथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इज 0. तो ये हमें कौन कहबा ना I1 रो वैल्यू हमर 0 है. तो ये जदि हमर करंट IS अछि माने ये हमें गोटे करंट सोर्स लगे छथि IS आमे जेमति KCL लगेबा जदि हमें किर्चॉफ्स करंट लॉ लगेबा आमे कौन करू ना ये केते अमाउंट रो करंट जाउछि ना दिस इज योर IS. तो गोटे करंट सपोज I हमें आउटपुट रे देखुछथि एंड ये सपोज गोटे करंट I1 जोटा आम आरएस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अक्रॉस रे धर सपोज करंट फ्लो कर I1 दार वैल्यू हूँ 0 हो गला आमर. तो ये आईएस रो वैल्यू को आम केसीएल अप्लाई करी कौन लिखते हैं आईएस इक्वल टू I प्लस I1. बट सिंस I1 इक्वल टू 0 सो आई कैन डायरेक्टली राइट आईएस वैल्यू इक्वल टू I. तामाने आमर करंट रो कौन सी चेंज होनी आईएस इक्वल टू I. एबे आमे अगेन जदि गोटे ग्राफ प्लॉट करबा बिटवीन द V एंड I, then let us draw. This is your suppose current axis and this is your now the potential axis. That is our potential V and here the current suppose I. Now we will get the constant amount of current. ता माने आमे जेतले voltage रो value V रो जदि आमे value बढ़ेबा then I रो कोनोसी भी changes होबनी तो से सबले कोन होबो ना हमर IS value ही दबो. This is the case for the ideal current source. जदि हमारा ideal current source थी so in that case we will get the constant amount of current IS. Whether आमे जितने भी V रो value change करूँ always we will get a constant amount of current IS. and इठी हमारा कौन ना जेहेतु internal resistance टा आमे गोटे infinite resistance लगेजन तो ये केस रे आमे गोटे constant current पाइबो. Now we will see what is practical current source. तो practical current source रे again आमे कौन करे ना गोटे finite internal resistance लगेबो. एबे हमें रेजिस्टेंस गोटे फाइनाइट वैल्यू रहिबो. नाउ लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द सर्किट डायग्राम. सो एटी हमर होची करंट सोर्स लगी छी एटी एंड दिस इज योर आईएस एंड एटी रेजिस्टेंस गोटे पैरेलली कनेक्ट होची दैट इज सपोज योर आरएस. एंड अगेन एटी हमें कोन करछोनी ना एटी हमें गोटे एनी एलिमेंट एटी जदी हमें गोटे कनेक्ट कर देबा एटी देन वी विल गेट एटी हमर सपोज करंट एटी फ्लो करछे द सेम आईएस and this current is your I1 RS across जो current flow करछि that is I1 and because of this device suppose the current is I. Okay and ये जो RS अछि that is your finite resistance. एबे हमें कहबा कोन ना again if you will apply the KCL here Kirchhoff's current law then आमे कोन करू गोटे नोड रे total input current आमे केन लिखु total input current रो डायरेक्शन प्लस टोटल आउटपुट करंट डायरेक्शन
जदि इनपुट टाको आम पॉजिटिव धरिबा आउटपुट टाको आम नेगेटिव धरिबा दैट इज इक्वल टू 0 ये भली आम करंदी। तो ये आम जदि किर्चॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करबा हियर तो ये आम कौन लिख परिया ना IS will be equal to डायरेक्टली मु लिखुची IS equal to दिस इज योर I1 प्लस I ठीक अच्छे जी आमर इनवर्ड डायरेक्शन में अच्छे दैट इज इक्वल टू टोटल योर आउटवर्ड डायरेक्शन में जी करंट आम फ्लो कर ओके। तो नाउ आम क्या फोकस कर आई रो वैल्यू पर तो ये आम लिखिपर कौन ना आई रो वैल्यू के ना I विल बी इक्वल टू IS माइनस I1। तो ये आम I1 रो वैल्यूटा केते कैलकुलेट करें ना सपोज ये जो एलिमेंट लगी सपोज योर पोटेंशियल ड्रॉप होची V सो आई कैन राइट दिस इज योर in place of I1 I can write this is your minus V by RS এটা আমার কেতে V by RS হলে না এবে গোटे जिनस देख एठी हमें करंट रो वैल्यू I केते पाइले ना दैट इज योर I इक्वल टू IS माइनस V by RS पाइले एबे हमर कोन होची ना जदी हमें V रो वैल्यूटा इंक्रीज करी करी जिवे जदी V इंक्रीज कला देन डेफिनेटली V by RS कोन होबो ना V by RS रो वैल्यू ऑल्सो इंक्रीज करिवो ओके देन दैट इम्प्लाइज आमर कोन होबो ना करंट रो वैल्यू अगेन एठी डिक्रीज करिवो आम ये IS माइनस समथिंग कर तो माइनस समथिंग करियो माने एठी कोन होबो ना डिक्रीज करिवो एबे हमें V वर्सेस I ग्राफ जदी प्लॉट करिवा सो लेट अस प्लॉट V वर्सेस I दिस इज योर V एक्सिस एंड दिस इज योर करंट एक्सिस एंड हियर सपोज द करंट हो इनिशियली करंट हो IS थिला तो एबे आमे कोन करछन इनिशियली IS थिला जेतले V रो वैल्यू 0 थिला नाउ जेतले आमे V रो वैल्यू इंक्रीज करी करी जिबा देन हमर करंट रो वैल्यू डिक्रीज करिवो नाउ यू कैन सी जेतले आमे V रो वैल्यू इंक्रीज करी करी जिबा करंट रो वैल्यू डिक्रीज करिवो ना ये देखी पारे कौन ना आइडियल करंट सोर्स प्रैक्टिकल करंट सोर्स भितर डिफरेंस कौन ना करंट रो वैल्यू कांस्टेंट रहइबो जदि हमें आइडियल करंट सोर्स कथा कंसीडर करबे तो सही केस रे करंट रो वैल्यू कांस्टेंट रहइबो एंड जदि प्रैक्टिकल करंट सोर्स कथा कहबा तो सही केस रे जेतो हमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हमें आइडियल करंट सोर्स रे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगेले एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स रे द रेजिस्टेंस वैल्यू इज फाइनाइट तो देन आमे एठी देखिया कोन ना करंट रो वैल्यू डिक्रीज करछु जेमती कि आमे आइडियल वोल्टेज सोर्स रे पाइथिले वोल्टेज रो वैल्यू कांस्टेंट रहइबो आइडियल केस रे सबले कांस्टेंट रहइबो बट प्रैक्टिकल केस रे somehow it will decrease. So this is all about ideal voltage source, practical voltage source and ideal current source and practical current source.